Hi, good morning, everyone. But in today's class, we are going to go ahead and we are going to talk about the evolution of Indian economy, right? And the reference book that I'm going to use for this chapter is going to be Ramesh Singh, chapter 3. I'm using the seventh edition. Up to you which edition you want to use. More or less, the content will be same across editions, right? So the name of the chapter is Evolution of the Indian Economy. बेटा, इस केस में हमें क्या बात करनी है कि ओवर टाइम इंडियन इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुई। हाँ, हमें पता है कि पहले हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1970 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नेंस ली बंगाल की। और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं, धीरे धीरे उनका रिलेशन इंडिया के साथ क्या हुआ। इनिशियली उन्होंने स्टार्ट किया कि वो एक्सपोर्ट करेंगे, ओपियम एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। एंड उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि उन्होंने कैसे पूरा इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया, राइट, दे कैप्चर्ड इंडिया। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे वहां से फिर हमने एक जर्नी टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस स्टार्ट की, right? So basically, we can go ahead and we can, in the evolution of Indian economy, talk about the background first कि इंडियन इकोनॉमी थी कैसे, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे थी, और जो भी इंडियन इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंस पे, हाउ डिड वी रीच दैट पोजीशन, हम वहां तक पहुंचे कैसे। हाँ, क्या 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 किया ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कि हमारी इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस एक स्ट्रेस में थी, राइट। सो वी वांट टू गो अहेड एंड वी वांट टू टॉक अबाउट दैट इन दिस लेक्चर। अच्छा, इसके बाद we will go ahead and we will also talk about certain important terms, जैसे you might have heard about the terms like drain of wealth, है ना। So we will go ahead and we will talk about those terms कि what is drain of wealth, how did we lead to drain of wealth. That is another thing which we are going to go ahead and we are going to focus in this lecture, ठीक है। Okay, so I begin by talking about the colonial nature of the economy. Colonial nature of the economy का क्या मतलब है कि during the period of colonial, during the period of Britishers, जब इंडिया एक उनकी कॉलोनी थी, तब इंडिया का क्या सिचुएशन था, right? So please write down. But try to make proper notes along with me, huh? Colonial nature of the economy. So write down India's economy served the interest of Britain rather than its own development. तो इंडिया में ऑफ कोर्स बिकॉज ब्रिटिशर्स वर देयर, तो अपना इंटरेस्ट कुछ नहीं था। जो भी था, जो भी आप मनी अर्न कर रहे थे, जो भी हो रहा था, इट वाज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री suffered from structural distortion while state played negligible role.
तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वहां पर वी डिड नॉट, हाँ, वी डिड नॉट हैव अ वेरी गुड सिचुएशन, बहुत अच्छा कोई सिचुएशन नहीं था, राइट। हमने देखा कि यू नो द अमाउंट ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल, हाँ, व्हेन देयर वाज industrial revolution coming across the world, right? India didn't have industrial revolution at that time. Why? Right? Because we understand that Britishers never wanted India to grow. इंडिया को वो ग्रो नहीं करने देना चाहते थे, तो इंडिया में कभी भी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस समय आ ही नहीं पाया जब बाकी जगहों पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ पाया। अंडरस्टैंडिंग? सो सेम इज विद द एग्रीकल्चरल सेक्टर। बाय एग्रीकल्चरल सेक्टर we understand that the agricultural sector was the main was the main center of our country. मतलब 70% population, 70% of people were in agriculture, but the productivity was very low. This is a structural distortion, that around 70% of people were in agricultural sector. Sorry, there was some disturbance. So 70% of the people, they were in agricultural sector, right? But productivity was very low. ये एक distortion हो गया, right? Then we never focused on the food crops. हमारा हमेशा से aim था कि हम cash crops पे focus करें, but food crops पे हमने कभी focus नहीं किया. Again, a distortion, right? So these are all the distortions that we had. इनको हम structural distortion बोल सकते हैं. सिमिलरली जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएं, द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। हाँ, इंडिया का ट्रेडिशनल सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लाइक हैंडलूम, लाइक हैंडीक्राफ्ट, एंड दैट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर्स, right? So again, a structural distortion. So we can go ahead and we can say that agriculture and um, industrial sector, it suffered structural distortion while the state played a negligible role. स्टेट का कोई रोल नहीं था, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। स्टेट माने हमारी गवर्नमेंट का, माने इंडिया हैड नो रोल, इट वाज ऑल with the Britishers, right? So please write down. The world was experiencing rapid industrial and agricultural expansion during the same period, but India was left behind. But India was left behind. Then I want to talk about drain of wealth and unequal exchange. Drain of wealth and unequal exchange. ठीक है? Drain of wealth is what? कि जो भी इंडिया से अर्निंग आ रही थी, everything was going to the Britishers, right? Unequal exchange कैसे हो रहा था? It was unequal exchange because if you remember, if you have heard before, तो Britishers क्या कर रहे थे ना? They were producing the raw material in India, sending it to Britain, converting it to final good, and
you know, importing that in India. So what was exported was cheap, what was imported was expensive, and therefore the balance of payment account of India was completely hampered. पूरा का पूरा balance of payment, export minus import, negative में जाया जा रहा था. It was going in negative, right? So please write down. There was unilateral transfer of capital to Britain through drain of wealth, policies of unequal trade exchange crippled Indian commerce and destroyed thriving handloom industry. तो बेसिकली हमने देखा कि ये बहुत ही अनइक्वल एक्सचेंज था. जो ब्रिटिशर्स परचेज कर रहे थे इंडिया से वो चीप था, सस्ता था, और जो ब्रिटिशर्स इंडिया में सेल कर रहे थे वो एक्सपेंसिव था. So exports were always less valued, imports were always heavily valued. So there was always balance of payment deficit in India, right? In a way, हमेशा they were able to extract money from India, extract gold from India, right? So the colonial vision, export primary product from India, import British manufactured goods, raise revenue for the drain of capital and imperial defense. तो बेसिकली जो भी पैसा ब्रिटिशर्स कलेक्ट कर रहे थे, वॉट एवर मनी ब्रिटिशर्स वर कलेक्टिंग, दे वर यूजिंग दैट मनी टू मेक देयर डिफेंस स्ट्रोंगर. उसी से वो अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, राइट? दे वर मेकिंग देयर डिफेंस स्ट्रोंगर. इज इट मेकिंग सेंस? ओके. नाउ let us go ahead and let us move forward, and let us talk about neglect of the social sector. Neglect of the social sector. So, education, health, and welfare were neglected. बहुत heavy illiteracy, very heavy, uh, problems with life expectancy, right? लोगों की जो एज थी जिसपे वो जिनकी डेथ हो रही थी इंडिया में वो बहुत कम थी. एवरेज 32.5. लिटरेसी एट इंडिपेंडेंस वेरी लो, 17%. तो लोग ना पढ़े लिखे थे, ना उनके पास अच्छा कुछ कमाने का जरिया था, ना उनकी अच्छी हेल्थ थी, राइट?
So there was education, health and welfare, they were neglected. And what was the result of this? The result of this was a literacy at independence was 17%, and B, life expectancy was 32.5 years, right? अच्छा, एक चीज है, एक थ्योरी है, हाँ, कि इफ, एंड दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, आप बहुत इजीली इस चीज को समझ सकते हो, कि इफ पीपल हैव लेस life expectancy, if their health is not good, so automatically people will be less productive. And if people will be less productive, so automatically GDP will be less in that economy क्योंकि लोग productive ही नहीं है, right? So we can go ahead and we can say that when people were having low life expectancy and low literacy, it basically meant that there was lower productivity, right? So this neglect lowered productivity and kept India a land of illiterate peasants, peasants. हाँ, ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में कभी आया नहीं, और इंडस्ट्री से सिर्फ हम रॉ मटेरियल बना रहे थे, फिनिश्ड गुड बनाने का हमने इंडिया में अलाउ नहीं किया। कैपिटल गुड्स बन नहीं रहे थे, कैपिटल के लिए हम ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट थे। और हमने देखा कि जो भी की सेक्टर्स थे, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोल प्लांटेशन, जूट, ये सब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, राइट? सो प्लीज राइट डाउन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, so no industrial revolution in India, was deliberately neglected, right? Infrastructure built only to extract raw material, not to promote Indian industry. Indian capitalists were dependent on British capital. Key sector controlled by British firm. Which key sector, beta? Shipping, banking, insurance, coal, plantation, jute. जो भी की सेक्टर थे, they were controlled by the Britishers, right? Next, let's talk about stagnation of growth. Stagnation of growth. So we noticed that जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, इवन ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, ग्रोथ एकदम स्टैग्नेंट थी, देयर वाज नो अपवर्ड ट्रेंड, इट वाज स्टैग्नेंट।
ठीक है। और हमारा जो रियल जीडीपी है, इट वाज ग्रोइंग एट लेस देन 2% पर ईयर, विच इज वेरी वेरी लेस। ठीक है। पर कैपिटा ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट जीरो, राइट। एंड अगर हम यूके से कंपेयर करें जहां पे 1% ग्रोथ रेट था, इंडिया में हमारा ग्रोथ रेट बिटवीन 1870 टू 1947 ओनली 0.2% था, राइट। पर कैपिटा इनकम ओनली 18 रुपीज इन 1899 एंड 39 रुपीज इन 1945। बहुत सारे फेमाइंस आते थे, बहुत सारे एपिडेमिक्स होते थे। और इन फेमाइंस में जब, इन हिंदी वी कॉल दैट भुखमरी, राइट, व्हेन दे हैड वी हैड फेमाइंस, people didn't have food, people were dying, and they were completely neglected by the britishers उनको completely neglect कर रहे थे, right? So we saw that there was a period of stagnant growth। ठीक है। जो इंडिया का परफॉर्मेंस था, जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी, वो बहुत ही ज्यादा स्टैग्नेंट थी। Is it making some sense, beta? Okay. So please write down stagnation of growth. Any doubt in this, anyone? I mean, just take this as a story, हाँ। आप अपने उसमें एक पिक्चर बिल्डअप करो, right? And just keep that picture in your mind. Okay. So, okay, stagnation of growth. Right down. During pre-independence period, showed near stagnation in growth. Real output in the first half of the 20th century grew at less than 2% per year. According to Angus Madison estimate, 1600 to 1870, zero per capita growth. 1870 to 1947, only 0.2% per capita growth, compared to 1% in UK. Per capita income 1899, 18 rupees, and 1945, 39.5 rupees. Frequent famines and epidemics highlighted socio-economic neglect by the Britishers. सोशियो इकोनॉमिक नेग्लेक्ट बाय द ब्रिटिशर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया एट इंडिपेंडेंस इट इनहेरिटेड अ कॉलोनियल स्टैग्नेंट एंड इम्पॉवरिश्ड इकोनॉमी। एक बहुत ही लोअर इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, पॉवर्टी बहुत हाई थी, प्रोडक्टिविटी वाज लो, गरीबी ज्यादा थी, इलिटरेसी वाज हाई, फेमाइंस वर देयर, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी। डेवलपमेंट जो थी वो completely blocked थी by the Britishers, right? Development was completely blocked by the Britishers. Is it making sense? Right? So basically, we understand that
इंडिया वॉज, जब हमें अपने हाथ में इंडिया मिली, इट वॉज अ वेरी वीक एंड डिस्टॉर्टेड इकोनॉमी, राइट? सो प्लीज राइट डाउन. At the time of independence, India inherited weak and distorted colonial economy. The leaders like Nehru, like Patel, right? And industrialized, like JRD Tata, GD Birla, were fully aware of the reality. तो चाहे हम गवर्नमेंट की, जो उस टाइम के पॉलिटिशियंस हैं उनकी बात करें, या चाहे हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि हम एक बहुत ही वीक, एक बहुत ही स्टैग्नेंट इकोनॉमी में एंटर कर रहे हैं. दे रियलाइज्ड that unless big structural changes were made, India would remain trapped in poverty and backwardness. इंडिया वुड रिमेन ट्रैप्ड इन पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस अनलेस हम कोई बहुत बड़े चेंजेस करें, हम इंडिया के लिए कुछ रियल में करें, हाँ, स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आए. इंडिया विल बी ट्रैप्ड इन पॉवर्टी. इंडिया गरीबी रहेगी, इंडिया में बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस ही रहेगी. इज इट मेकिंग सेंस? Okay, beta. I hope that the background of what India was